Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. You are watching Solve and Simplify. Please press the subscribe button and the bell icon right next to it and give it a thumbs up if you like my work. In this video, I'm going to tell about the addition and subtraction of matrices. So, our today's video's topic is addition and subtraction of matrices. Since we have discussed different type of matrices in our previous video, now we will see how can we add two matrices and how can we subtract two matrices. Let A and B be any two matrices with real number entries. The matrices A and B are comfortable for addition if they have the same order. For example, if we have two matrices A and B and we have to add A and B. First of all, we will check either they are comfortable for addition or not. And how can we check that they are comfortable for addition or not? If we know what is their order. If I know what is the order of A and if I know what is the order of B. And can you please tell me what is the order of A? The order of A is 2 by 3. And the order of B is also 2 by 3. It means these two matrices are of same order. A and B are of same order, so we can say that they are comfortable for addition. Okay. Addition of A and B, return A plus B, means if we have to add A and B, we will write them like this, A plus B. And it is obtained by adding the entries of the matrix A to the corresponding entries of the matrix B. We have to add corresponding entries of A into into entries of B. Corresponding entries means कि मतलब हमें आमने सामने वाली एंट्रीज को ऐड करवाना है, यानी अगर ये A है और ये B है ना, तो 2 को इस वाले 2 में ऐड करवाना है, 3 को इसमें, 4 0 को उसके सामने वाली एंट्री में. corresponding entries means आमने सामने की एंट्रीज होती है ना, उनको ऐड करवाना है. तो हमें A प्लस बी फाइंड करना है. ओके, A मैट्रिक्स हमने लिया प्लस B मैट्रिक्स ले लिया. अब इनको ऐड करवाएंगे 2 प्लस -2. इसको एज इट इज़ फिलहाल रखेंगे. ओके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो. 2 प्लस -2. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट 3 प्लस 3, 0 प्लस 4. ओके, 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 6 प्लस 3. सो 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 minus 2 0, 3 plus 3 6, 0 plus 4 4, 1 plus 1 2, 0 plus 2 2, 6 plus 3 9. So this is how we can add any two matrices if their order is same. This is the condition for addition of matrices. If their order is same, we can add, but if the order is not same, then addition is not possible. Now moving towards the subtraction of matrices. How can we subtract any two matrices? If A and B are two matrices of same order, again same thing. अगर हमें दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करवाना है ना, तो हमें दोबारा से देखना पड़ेगा क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है. देयर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द corresponding एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी. जिस तरह से दो मैट्रिसेस के एडिशन को हम ए प्लस बी से ज़ाहिर कर रहे थे, इसी तरह से हमें दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन को ए माइनस बी से ज़ाहिर करना है. और जैसे हम दो मैट्रिसेस को जब ऐड करते हैं तो उनकी corresponding एंट्रीज़ को ऐड करवाते हैं, इसी तरह से जब हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी उनकी corresponding एंट्रीज़ को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, अब हमें ए और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है. हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, फिर माइनस बी मैट्रिक्स ले लिया. corresponding एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करवाना है, इस बात का ध्यान रहे. 2 minus 0, 2 minus 0, 3 minus 2, 3 minus 2, 4 minus 2, 4 minus 2, 1 minus माइनस माइनस एज इट इज़ फिलहाल लिख लेंगे. ठीक है, 1 minus minus 1, 5 minus 4, 0 minus 3. स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट है, आपकी प्रैक्टिस है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप भी बेशक यहाँ पे लिख लें. लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप करें. ठीक है. ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, 2 minus 0 2, 3 minus 2 1, 4 minus 2 2, माइनस माइनस प्लस है अगर,
तो फिर 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, 5 - 4 1 और 0 - 3 हम लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी टू मैट्रिसेस। देयर वी डील विद of order 2 by 3. You can add or subtract any two matrices of same order. Okay, the first thing you have to deal with is the order must be same. If their order is same, you can add or subtract any type of matrices. I think you can add now. You can add any type of matrices of same order. Now let's move towards the next topic, which is multiplication of a matrix by a real number. For example, if we have a matrix A, if we have a matrix A and there is a real number 2, and we have to multiply this real number by matrix A, 2A. We have to find 2A. How can I find 2A? Okay, so we can find 2A like this. We have A matrix, and which is 1 2 3 4. We have to multiply A matrix with the real number 2. So I will multiply each entry of A matrix by real number 2. 2 into 1 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So this is how we can multiply any real number with the matrix. Okay, let's see. Let A be any matrix and the real number K be a scalar. Then the scalar multiplication of matrix A with K is obtained by multiplying each entry of matrix A with K, and it is denoted by Ka. मीन्स कि अगर कोई के नंबर है, रियल नंबर है, उसको हमने किसी ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें कैसे हासिल हो सकता है? अगर हम क्या करेंगे, हम अपने मैट्रिक्स ए की या जो भी मैट्रिक्स है उसकी हर एंट्री को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें वो जो के ए एक प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें हमें कोई नहीं देखना ऑर्डर क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। इसमें सिंपली आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर को दिए गए मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसे सिंप्लीफाई करके आगे पास जो है उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लीव्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अनचेंज। ऐसा करने से यानी कि जब आप किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसके ऑर्डर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। Is it clear? Okay, this is for today's video. In next video we will discuss about commutative law and associative law of addition. Since we discussed about the addition of matrices in question number 1, x of x is 1.3, in question number 1, which of the following matrices are comfortable for addition? सर सिर्फ आपने देखना क्या है कि आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो कि हमने अभी देखा है एडिशन के लिए हमें क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर होती है, तो उस चीज़ के लिए आपने करना क्या है, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने देखना है क्वेश्चन 1 में कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, और दोबारा से बताती हूँ कि कौन से मैट्रिसेस जो कंफर्टेबल होते हैं एडिशन के लिए, वो मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिए जिन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ओके, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।